वीडियो में आवाज नहीं आ रहा। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। लाइक करिए मैडम को, बोलिए वेरी गुड मॉर्निंग। मैडम बोलिए वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ ठीक है। मैडम की आवाज सुनाई दी? मैडम का आवाज सुनाई दिया है। वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा, वो आप बंद कर दो। रिकॉर्ड हो रहा है ना? ये सबसे अच्छा चीज है। ये कंफर्टेबल फील है, ये काला वाला, ये ज्यादा अच्छा है। The first step towards change is awareness. The second step is acceptance. A bright and wonderful morning to all our esteemed guests, respected Vice Principal Ma'am, respected heads of all departments, faculty members, the enthusiastic adherents to our BIT family, and dear parents. Myself, Anitita Chakravarti, from the Department of Applied Mathematics,
Welcome you all to the second day of this virtual induction program for the 35th batch of BITNs for the class 2020-24. Yesterday was a day of awe and admiration for our enthusiastic beginners who are undertaking the journey toward technical excellence under the wings of the best engineering college of Central India. A glimpse of the pinnacle, a view of the path was provided yesterday. Today, we take the second step and get the roadmap of the journey undertaken. As Abraham Lincoln said, give me 6 hours to chop down a tree, and I will spend the first 4 hours sharpening the axe. And even before sharpening, let us know our tools. In the process of building an efficient engineer, the basic sciences plays the role of foundation. The scientist discovers a new type of material or energy, and engineer discovers a new use for it. A major part of the foundation course to be learned in the first and the second semester of BTech program is the basic sciences, applied chemistry, applied physics, applied mathematics, and also humanities. We have with us on this platform Dr. Santosh Kumar Sar, professor in charge of first year. Sar sir has obtained his PhD in the area of physical organic chemistry from Pandit Ravishankar Shukla University in the year 1995. He has carried out postdoctoral research fellowship with Professor Sang Shu Kim in Ha University in Incheon, South Korea. He has been awarded a research fellowship by Council of Science and Technology Bhopal for the year 1992 to 1995. He has the visiting fellow of different national and international institutions such as Cholkon University, Thailand, Institute Kemai, Malaysia, etc. Dr. Sar has handled projects awarded by various national bodies such as All India Council of Technical Education, New Delhi, Chhattisgarh Council of Science and Technology, Raipur, Chhattisgarh Medicinal Plant Board, Raipur, etc. He has, to his credit, more than 100 research papers, quite a few patents, and 2 books. We have the privilege of having his guidance in delivering the knowledge of chemistry and in various other offices in our college for the last 23 years. Presently, Dr. Sar Sir is Dean Student Welfare and Head of Department of Chemistry, as well as the Professor in charge of first year academics. I request Dr. Sar Sir to guide and inspire the students by familiarizing them with the scheme of the first year course of BTech. Also, I implore him to introduce the subject of applied chemistry. Please, sir. Thank you, Dr. Anandita. And on behalf of Bhilai Institute of Technology, I welcome you all in this morning for 31st batch of BTech at our esteemed autonomous institute. You are the first autonomous batch of this institute, and I warm welcome you all in this morning. So, Bhilai Institute of Technology is a first technological institute in undivided Madhya Pradesh and Chhattisgarh. It is established in 1985, and you are the 35th batch of this institute as a first autonomous batch of this institute. So, most welcome for 2020 batch up to 24. We are organizing here online induction program, and on behalf of BTech first year in charge, this presentation I will give you and some rules, regulations, and what is the scheme, what is the our working mode, and how we work or how we stay here for 4 years with all activities and everything. I will explain you within 25 to 30 minutes. Bhilai Institute of Technology is an autonomous institute for this academic session to next 10 years. So, what is Bhilai Institute of Technology? We are
ANAC accredited in with A grade with a single cycle means हम लोगों को जो NAC accreditation मिला that is with a first cycle we achieve NAC accreditation A and in this region Central India region we are the first institute we have achieved this NAC A grade accreditation. Next is NBA, National Board of Accreditation, that is very prestigious thing which we have all our engineering departments are NBA accredited from National Board of Accreditation for last next 5 years. So in our institute, we are seven engineering departments, four science and humanities department, and two PG department. So all these 13 departments are here. Among that, all engineering departments are NB accredited, and in this 13 departments, 10 departments are engaging in research also. We are AICT approved institution since beginning. Or AICT is our main body for this central zone. We are NIRF rank, good NIRF rank with us, and UGC we have accredited with 2F, and we are also ISO accredited institution. So in general, we are going to organize the induction program for BTech first year from 17th to 26th. So this induction program will give you a brief knowledge of Bhila Institute of Technology, culture, and how you stay here, how you attend your class, how you hear in a disciplined manner. So in my next words, we are going with this. This is organizational structure of Bhila Institute of Technology. There is a governing body, that is the trust body. Under this trust body, director, then principal, then vice principal, then heads of the department, deans, professor in charge and chairman of the committees, and registrar. Under registrar, office heads, ERP, admission, student section, so many things are there. And under heads of the department, some coordinators of MTech is there. So here I wish to explain you that there are so many committees. There is a student welfare committee and proctorial board, anti-ragging committee and grievance redressal cell, inter complaint committee for women security cell, library committee, games and sports committee, student union and extracurricular activity committee, literary club committee, professional activities committee, post matric scholarship is there, training and placement cell is there, alumni committee is there, institute innovation cell is there, planning evaluation and academic audit committee is there, student feedback committee is there, research and development committee, and some mock committee is there, and first year committee is also there. So myself is take care of the administration of first year, and second first year in charge, that is academics. Dr. Raghavendra Banchor is there. He is look after the things of academics, means your all academic activity and will be look after by Dr. Raghavendra Banchor sir. He is professor of mechanical engineering, and whatever the things, sessional timetable and your all numbers and whatever the academic things, he is the in charge of BTech first year for academic, and I am in charge of the BTech first year for administration. NCC is also there. We have boys and girls NCC wing, and NSS is also there. So I explain you what are the working of these committees. If you go with this proctorial board and anti-ragging committee and grievance redressal cell, so first of all I tell you that आप लोगों ने कल जो अटेंड किया वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल सर का और मैडम का लेक्चर, उसमें बहुत सारे जो चैट हमको देखने को मिल रहे थे। आपको ये बताना होगा यहाँ कि आप जो है प्रोफेशनल कॉलेज में एंटर कर रहे हैं, एंड इन दिस प्रोफेशनल कॉलेज you are the person who get the degree of
BTech, and we will have the branches, and we look after the things, or the all the activity will go through your Gmail thing, Gmail activity. So यदि आप ये गलत फहमी में मत रहिए कि आपका क्लास में आप कुछ भी लिखेंगे या कुछ भी करेंगे आप पकड़ाएंगे नहीं, और जो है हमारा सेल कुछ करेगा नहीं। आपको ये बता दूं कि ये एक प्रोफेशनल कॉलेज है, और आपके जो भी रजिस्ट्रेशन हुआ है या होगा, आपको क्लास में एंट्री आपके जीमेल आईडी से ही मिलेगा। और उस क्लास में जीमेट या जो भी ऑनलाइन टूल्स हैं, वो रजिस्टर्ड टूल्स हैं इंस्टीट्यूट के साथ। इंस्टीट्यूट में एक सीसीएफ सेंटर काम करता है, और उसके थ्रू ही आप उसमें एंट्री लेंगे। यहाँ जो है एज ए फर्स्ट ईयर आपको मैं बता दूं कि आप फर्स्ट ईयर में बीटेक में प्रोफेशनल जगह में पहले स्कूल के बाद आप एंट्री ले रहे हैं, तो आपको यहाँ पर यहाँ के नियम कायदे, अभी चूंकि आप फिजिकली हमको नहीं देख पा रहे हैं, ऑनलाइन आपने बहुत सारी क्लासेस अटेंड की है, या ट्वेल्थ के बाद आप परीक्षा दिए हैं और आपको अभी ऑनलाइन क्लास में अटेंड किया जा रहा है, तो डिसिप्लिन क्लास का वैसा ही होगा। ब्लैक बोर्ड में वैसे ही पढ़ाई होगी, वैसे ही आप जीमेल से जुड़ेंगे, वैसे ही आप घर पे बैठ के पढ़ेंगे, और हम लोग यहाँ से ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाएंगे थ्रू कैमरा एंड ऑनलाइन मोड। बट योर अटेंडेंस, योर जीमेल आईडी, योर आईपी एड्रेस, all the things are in our record. Without any permission no one can enter in this class। और यदि आपकी क्लास की अटेंडेंस कम हो रही है तो वो भी रिकॉर्ड होगी। और यदि आपका क्लास में आपके जीमेल आईडी से या आपके आईपी एड्रेस से या आपके कोई भी एंड से जो कि आपको रजिस्टर्ड किया गया है, वहां यदि आप कुछ कोई भी इनडिसिप्लिनरी थिंग्स होती है, तो इट विल बी कम इनटू दी ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल। और यदि कोई भी सिस्टम हमारा ऐसा है कि फर्स्ट ईयर का क्लास कोऑर्डिनेटर होता है, हर क्लास का एक कोऑर्डिनेटर होगा। जैसे कि आपने आपका क्लास मॉनिटर होता है ना, वैसे ही आपका क्लास कोऑर्डिनेटर सिस्टम है। देयर विल बी ए टीचर हु विल लुक आफ्टर एवरी सेक्शन। नाउ after the total induction program up to 26, we will decide the section and timetable and your brochures and what is the course content. Now, in next slide, I will explain you what is the scheme of BTech first year. But detailed course, detailed things will be given you after 26, or whenever we think that before 26 we will give you all the things, as we have B1 to B4 WhatsApp group. But so many persons are asked that I am mechanical branch, I am CSE branch, I am civil branch, but there is no uh, disciplinary WhatsApp group for B1 it is civil, or B2 it is CSE. There is nothing like that. In future, after 26, we will divide the branch properly, and will admit you as a Google form is floated in this WhatsApp group B1 to B4, that what is your Gmail ID, what is your name, what is your admission number. But in near future, we again float this Google form for proper, there may be some changes are there. So we will decide proper section with Gmail ID, and all the things will be displayed to you। आपको सब चीज बताया जाएगा, और आपको उसमें नियम कानून के बारे में भी बताया जाएगा कि आपको ऑनलाइन क्लास कैसे अटेंड करना है, और उसमें आप कौन सी जीमेल आईडी से, जिस जीमेल आईडी को आप देंगे उसी जीमेल आईडी से हम रजिस्टर्ड करेंगे। तो ये एक बात हुआ आपका ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल का, कि ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल जो है फर्स्ट ईयर कोऑर्डिनेटर के साथ इस तरह से काम करेगा। और इसमें यदि बहुत ज्यादा इनडिसिप्लिनरी दिखा जाता है तो कॉलेज से रेस्टिकेशन तक का भी आपको हो सकता है, और ऐसा हुआ है। आप ये कभी गलतफहमी में मत रहिए कि कभी भी कॉलेज में आप कुछ भी चीज करेंगे, या आप कुछ अपने आईडी से करेंगे तो गड़बड़ है ना। ये इसलिए आप पहले ही समझा दिया जा रहा है क्योंकि आप बच्चे हो, ट्वेल्थ से आए हो, आपको ऐसा लगता है कि कॉलेज में आपको कोई देख नहीं रहा है, लेकिन ये यहाँ पर सिस्टम जो है प्रोफेशनल वे में चलेगा। नेक्स्ट जो है आपका
लाइब्रेरी कमिटी है, लाइब्रेरी है आपके पास। आप फिजिकली आ नहीं पाओगे तो भी हमारे पास ऑनलाइन सिस्टम में भी लाइब्रेरी में आप बुक्स देख सकते हो। उसके लिए फिर वही बात है कि आपका जो आईडी है, जीमेल आईडी है, या आपकी जो आईडी या एडमिशन नंबर जो आपको दी जाएगी, उसी के थ्रू अभी ऑनलाइन आपको लाइब्रेरी में बुक्स आप देख पाओगे। सबसे पहले आपका क्लास स्टार्ट होगा ऑनलाइन टाइम टेबल के हिसाब से। उसके बाद आपका जो है बुक्स इशू होना है। क्लास स्टार्ट होने के पहले आपको कोर्स कंटेंट और कोर्स के बारे में बता दिया जाएगा कि कौन सा ब्रांच कौन सा कोर्स पढ़ेगा फर्स्ट ईयर में, वो अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ। लाइब्रेरी आप ऑनलाइन एसेस कर सकते हो, आपको ये पासवर्ड दे दिया जाएगा। आप घर पे बैठ के भी लाइब्रेरी एसेस कर सकते हो जितनी हो सके। हमारे पास में जो है बहुत सारे ई जर्नल, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। लाइब्रेरी के जो इंचार्ज है वो नेक्स्ट आपके प्रेजेंटेशन में बताएंगे। गेम्स एंड स्पोर्ट्स कमेटी है, जिसमें जो विश्वविद्यालय जितनी गेम्स हमको अलॉट की हुई है, उसमें हम जो सारे गेम्स है वो इस कैंपस के अंदर में सब हो सकता है। उसके लिए आपको हम फैसिलिटी देते हैं। और उसके बाद जो है आपके प्रोफेसर इंचार्ज हैं गेम्स के, और उनकी टीम है वो आपको रजिस्टर्ड करेंगे। फिर अभी ऑनलाइन सिस्टम में रजिस्ट्रेशन सभी जो है आपके जीमेल आईडी से ही होगा। स्टूडेंट यूनियन है, तो स्टूडेंट यूनियन को फर्स्ट ईयर में जो है मेरे ख्याल से जॉइंट सेक्रेटरी का पोस्ट मिलता है, तो वो नंबर के हिसाब से होता है। लिटरेली कमेटी है जिससे हमारी मैगजीन निकलती हैं, उसके बारे में भी आपको नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में बताया जाएगा कि कैसे मैगजीन में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। प्रोफेशनल एक्टिविटी क्लब है, इंजीनियर्स है, तो आपके पास बहुत सारे क्लब्स हैं यहाँ पर। और मैं अभी आगे बता रहा हूँ कि क्या क्या क्लब हैं और किस तरह से वो काम करेंगे। और वो क्लब अपने आप अपना प्रेजेंटेशन सब लोग अपना 10-10 मिनट देंगे, और आपको आपका आइडेंटिफिकेशन ही आपका जीमेल आईडी होगा और आपका एडमिशन नंबर होगा। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप सेक्शन है, जिसमें जो एलिजिबल है वो कांटेक्ट करेगा। ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल है, जिसका कि काम ही है कि आपको स्किल तैयार करना और आपको ट्रेनिंग और प्लेसमेंट के लिए प्रॉपर वे में तैयार कर देना। और वह काम जो है हम फर्स्ट ईयर से ही करते हैं, और वो भी अभी आपके मेन आइडेंटिफिकेशन जो है जीमेल से ही होगा। उसमें जो है उनकी भी अलग अलग कमिटी मेंबर्स हैं जो कि आपसे संपर्क में रहेंगे। एलुमनी कमिटी में भी आप आते नहीं हो, बाद में आपको रजिस्टर्ड कर लिया जाएगा एलुमनी के लिए। ऑल ओवर वर्ल्ड हमारे करीब करीब 20,000 के आसपास एलुमनी है, जो कि पूरे विश्व में फैले हुए हैं, जिसका कि लाभ आपको आपके रजिस्ट्रेशन से एलुमनी क्लब में आपको मिलेगा। इनोवेशन सेल है, आपके पास यदि स्टार्टअप प्रोग्राम है या कोई ऐसी चीजें हैं जिसको कि आप अपने आइडिया को स्कूल में कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं, तो आप हमारे कॉलेज में एक इनोवेशन सेल है, वहाँ पर फंड है, वहाँ पर टीचर है, और वहाँ पर गाइड देने के लिए आपका एमएसएमई के लोग हैं, जो कि आपको इनोवेशन सेल में यदि आप रोबोट बनाना चाहते हो, यदि आप कोई ऐसा चीज बनाना चाहते हो, तो उसके लिए हमारे पास फंड है। और उस इनोवेशन सेल के तहत आप फर्स्ट ईयर से ही वहां पर काम कर सकते हो। अभी आपको उस इनोवेशन सेल में भी यदि जुड़ना होगा तो रिक्वेस्ट करना पड़ेगा आपके आईडी से। तो इससे आपको समझ में आ रहा है कि योर आईडी एंड योर एडमिशन नंबर इज वेरी एसेंशियल एंड वेरी कॉन्फिडेंशियल, तो उसको आपको मिसयूज नहीं करना है। प्लानिंग एंड एकेडमिक ऑडिट, दैट इज फॉर एंड स्टूडेंट फीडबैक, आप फीडबैक भी देंगे जब आप पढ़ाई करेंगे कि कैसे क्या हुआ, उसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं वो लेंगे। रिसर्च डेवलपमेंट सेल है, जिससे हम लोग बहुत सारे कॉन्फ्रेंस सेमिनार और बहुत सारे ऐसे रिसर्च एक्टिविटी करते हैं, जिसमें अभी 20 नवंबर को बिटकॉन हमारा एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हर साल होता है, वो होने जा रहा है। वो आप ऑनलाइन देख सकते हो। आपको यदि रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको हम लोग ग्रुप में, जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें कि करीब करीब 700 लोग जुड़े हुए हैं, उसमें हम लोग लिंक भेज देंगे। और एनपीटीईएल कोर्स है, जैसे आपका एक आप करते हैं कि आपका मीन्स जो आपका कोर्स है वो आपको उसके अलावा भी आपको कोई चीज पढ़ना है, या कोई चीज ऐसी चीज है जो आपको अच्छा लगता है, तो आजकल जो है एआईसीटी ने एनपीटीईएल कोर्स नेशनल लेवल पर तैयार किया है, जो कि सर्टिफाइड कोर्स है जिसपे आपको क्रेडिट मिलता है।
और आप आराम से उस क्रेडिट कोर्स को ज्वाइन करके ऑनलाइन परीक्षा दे सकते हो, जिसके लिए हमारा कॉलेज में एक सेल बना हुआ है। डॉक्टर अर्पणा रावल मैडम उसकी इंचार्ज हैं, और उनके साथ बहुत सारे टीचर हैं जो आपको उसके लिए गाइड भी करेंगे कि आप रादर देन यूर नॉर्मल कोर्स, आप अच्छे और कोई कोर्स यदि करना चाहते हो जो कि आपके इंटरेस्ट का है, जो कि आपके कोर्स में जुड़ा हुआ नहीं है, तो वो 15 दिन 20 दिन मीन्स वीक में होता है। 2 वीक 4 वीक 6 वीक 8 वीक इस तरह से एनपीटीएल कोर्स होता है। उसके लिए गाइडेंस और आपको बताया जाएगा कि कैसे उसमें रजिस्टर्ड होना है, कैसे उसको फॉलो अप करना है, कैसे उसमें आप अपना काम कर सकते हैं या सर्टिफाइड हो सकते हैं, उस कोर्स से लेकर के सर्टिफिकेट ले सकते हैं जो कि क्रेडिटेबल है। फर्स्ट ईयर का जो कमिटी है, हम दो लोग मिलकर के फर्स्ट ईयर को देख रहे हैं। मैं हूँ डॉक्टर संतोष कुमार सर जो कि एडमिनिस्ट्रेशन देखूंगा, और मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि डॉक्टर राघवेंद्र बंछोर सर जो है मैकेनिकल के प्रोफेसर हैं, वो जो है एकेडमिक देखेंगे। तो आपकी जो सेशनल है, टीए मार्क्स है, सीटी है, या टाइम टेबल है, या क्लास से एकेडमिक रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, वो डॉक्टर राघवेंद्र बंछोर सर देखेंगे। ही इज प्रोफेसर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। एनसीसी का हमारे पास बॉयज एंड गर्ल्स विंग दोनों है, जिसमें हमारे डॉक्टर संतोष मिश्रा जो है बॉयज के कमांडर हैं, और मिस उमा बाला राजू जो है गर्ल्स विंग की कमांडर है। दोनों में एक डॉक्टर संतोष मिश्रा सर जो है वो मैकेनिकल के टीचर प्रोफेसर हैं, और मिस उमा बाला राजू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की टीचर है। हमारे पास जहाँ तक मेरे को नॉलेज है 50 सीट का कोटा है एनसीसी विंग में, जिसमें कि एबीसी सर्टिफाइड कोर्स है। और इसके बारे में एनसीसी और एनसीसी का जब लेक्चर होगा तो वो उसको आपको ये दोनों लोग बताएंगे। एनएसएस में डॉक्टर सबाना नाथ सिद्दीकी है और मिस्टर योगेश साहू है। इनकी भी वृहद एक्टिविटी रहती है, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे वो थाना हो, चाहे वो रोड सेफ्टी हो। बहुत सारी एक्टिविटी रहती है जिसमें कि आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने इस एनएसएस के विंग में इन्वॉल्व होकर के अपना काम कर सकते हैं। इसके लिए एनएसएस वाले आपको बताएंगे। ये हो गया आपका कॉलेज का जो आपका पोर्टफोलियो था, वो आपको मैंने बता दिया, जो कि प्रोफेसर इंचार्ज एंड कमिटीज में आ जाता है। इसके बाद जो है हमारा इंडक्शन प्रोग्राम जो है डे 3 से लेकर के डे 8 तक चलना है। उसमें आपको जितने मैंने बताया कि 7 इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स हैं, वो 7 इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हेड्स आपको अपने डिपार्टमेंट के बारे में बताएंगे। अभी हम 4 साइंस के हेड्स जो है आपको साइंस डिपार्टमेंट के बारे में बताएंगे। और जो है उसके बाद जो है कल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का है, और क्लब्स का डे 5 को है। और उसके बाद हम मोटिवेशनल एंड ह्यूमन वैल्यू एंड योगा पे भी जाएंगे, और लास्ट में आपको एंटरटेनमेंट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का होगा। अब लास्ट में जो है स्कीम ऑफ टीचिंग एंड एग्जामिनेशन। अभी आप देखिए कि इसके ऊपर में लिखा है बीटेक फर्स्ट ईयर, सिविल मैकेनिकल कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, 3 ब्रांच है। नंबर है 1000, और सब्जेक्ट है 10। जिसमें से सब्जेक्ट में जो है आप देखिए कि 5 जो है आपका थ्योरी सब्जेक्ट है, और 4 जो है आपका लैब है, और एक जो है नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट है ना। तो इस सब्जेक्ट को समझने के लिए आप इस तरह से समझिए कि पूरा इंजीनियरिंग जो है 160 क्रेडिट कोर्स का है, और यहाँ पर आपको 20 क्रेडिट कोर्स में फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ना है, और 20 क्रेडिट कोर्स में आपको सेकेंड सेमेस्टर पढ़ना है। मीन्स ऑलमोस्ट 40 क्रेडिट आप एक सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं। तो आप देख लीजिए कि इसमें अप्लाइड मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है। सबसे पहले आप ये समझ लो कि आपको पढ़ना सब है। फर्स्ट सेमेस्टर में सिविल मैकेनिकल और सीएसई वाले इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। आप देखिए सेकेंड सेमेस्टर में सीएसई मैकेनिकल और सिविल वाले इन दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में सीएसई मैकेनिकल वाले क्या पढ़ रहे हैं? अप्लाइड मैथ्स 1, फिजिक्स, प्रोग्रामिंग, सॉल्विंग, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स डिजाइन, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन इन इंग्लिश, applied physics lab, applied programming lab, and engineering graphics lab, and professional communication engineering English lab, and report writing. तो रिपोर्ट राइटिंग इंग्लिश के बारे में इंग्लिश के मैडम बताएंगी।
मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे आपने देखा कि ये 3 ब्रांच वाले इस 10 सब्जेक्ट को, मतलब 5 थ्योरी, 4 लैब और एक आपका नॉन क्रेडिट कोर्स है, उसको आप पढ़ रहे हो, जिसमें कि आपका टोटल नंबर 1000 है, टीए मार्क्स 240 है, सीटी मार्क्स 100 है, एंड ईएसी एंड सेमेस्टर मार्क्स जो है आपका 660 है ना। 660 में आपका 160 मार्क्स जो है आपका लैब का है, मींस 500 मार्क का ही आपका एंड सेमेस्टर एग्जाम है, और आपका बाकी 500 मार्क जो है इंटरनल असेसमेंट है, सीटी है, टीए है। सीटी का मतलब यह है कि आपको 2 बार सीटी लिया जाएगा, जिससे कि आपका असेसमेंट होगा कि आप का कौन सा सिटी में आपका मार्क्स अच्छा आ रहा है। पहले आपका 2.5 यूनिट से होगा, फिर 2.5 यूनिट से होगा, और उसके बाद आपको एसेस किया जाएगा कि सिटी में आपका परफॉर्मेंस कैसा है, जिसकी की पूरी हमारी पास ईआरपी की टीम है। आपका अटेंडेंस, सिटी एंड एवरी मार्क जो है आपके पेरेंट्स के पास जाएगा, जो कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड आपके मेल आईडी है। तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि हमारे पास सब्जेक्ट जो है 5 सब्जेक्ट है एक सेमेस्टर में, 4 लैब है और एक जो है नॉन क्रेडिट कोर्स है। ये एक दो दूसरे ब्रांच वाले उस सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच। मीन्स ये जो है फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं मैथ्स 1, अप्लाइड केमिस्ट्री, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी। ये 5 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और 4 लैब, केमिस्ट्री लैब, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लैब, वर्कशॉप एंड इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी लैब, एंड अगेन रिपोर्ट राइटिंग। तो आपको ये समझना होगा कि यदि फर्स्ट सेमेस्टर में ये ब्रांच वाले इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, और जो ये ब्रांच वाले कंप्यूटर साइंस, सिविल और मैकेनिकल वाले इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, तो आपको रोटेट हो जाएगा सेकेंड सेमेस्टर में, आप उधर वाइस वर्सा हो जाएगा, है ना। स्कीम वही है आपका, 1000 नंबर का है, और टीए मार्क्स भी उतना ही है, सब चीज वैसा ही रहेगा। क्रेडिट आपका 20 क्रेडिट का है, मीन्स आप फर्स्ट ईयर में 40 क्रेडिट क्रॉस करना है। आपको 10 थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ना है, 8 प्रैक्टिकल पढ़ना है, और 2 आपको नॉन क्रेडिट कोर्स करना है। ठीक है। अब जो है आपको यहाँ पर एंड सेमेस्टर एग्जाम जो है एक ही बार होगा, सीटी 2 बार होता है। टीचर्स असेसमेंट आपको टाइम टू टाइम हमेशा जो है आपके टीचर्स असेसमेंट में कई प्रकार के आपको असेसमेंट किया जाएगा, कभी आपको नोट्स दिया जाएगा, कभी आपको इंटरनल टेस्ट ले सकता है, या कभी आपको प्रेजेंटेशन करा सकता है, जिसको जैसा जिस सब्जेक्ट के हिसाब से होगा वो उस हिसाब से अपना असेसमेंट करेगा। दैट विल बी गिवन बाय योर इंडिविजुअल टीचर। और सीटी जो है वो कॉमन होगा आपके, जैसे एग्जाम होता है सबका एक साथ होगा सीटी। और सीटी हम लोगों का जो है सीटी 1 सीटी 2 करके 2 बार होता है, स्प्लिट किया जाता है, और 2 बार सीटी होता है। मीन्स आपका आधे यूनिट जब खत्म हो जाएंगे तो एक बार सीटी होगा, और आधे यूनिट जब खत्म हो जाएंगे तो एक बार सीटी होगा। सो यहाँ पर मुझे ये बताना बहुत आवश्यक है कि आपका फर्स्ट ईयर का जो पूरा कैरिकुलम है वो 90 डेज का होता है। तो आपको अलर्ट रहना है, अटेंटिव रहना है, और आपके कोर्स कैरिकुलम को पूरा करना है। साथ में जो आपकी अदर एक्टिविटीज है उसमें भी यदि आप इंटरेस्ट लेते हैं तो वो भी आप इंजॉय कर सकते हैं। नाउ इन दिस मोमेंट आई फिनिश दिस lecture of BTech first year as a professor in charge BTech first year, and now I start second my lecture, that is as a professor and head department of applied chemistry. एक प्रेजेंटेशन आ रहा है ना, तो close करें। नहीं तो वो कैसी रहेगा वो सेट कैसी रहेगा
Hello, dear students. Again, welcome. Now, again, Dr. Santosh Kumar Sar is here as the Department of Chemistry, Professor and Head, Department of Chemistry. Here, now we talk about the Department of Chemistry. Our department is comprises of qualified and trained dedicated team of faculty and the staff members who work in highly encouraging environment. It supports the undergraduate and PhD students understanding the chemical aspects of engineering so that they can be better engineers for the nation. The faculty of the department is actively engaged in research activity, testing and consultancy and teaching. The department research has been supported by the Department of Atomic Energy, Board of Nuclear Science, All India Council for Technical Education, Chhattisgarh Council of Science and Technology, CG Medicinal Plant Board, and TechU CSBTU. In our department, we are five members, and all among all five members, we two are professor, and four members are having their PhD degree, and one member is pursuing his her PhD degree. The department has successfully completed six sponsored research projects and four are ongoing projects are there. Doctoral research is carried out actively in the department. The major thrust area of analytical chemistry, environmental chemistry, surface chemistry, drug and chemical characterization of medicinal plant. 20 research scholars have been already awarded PhD degree and presently 10 candidates are pursuing their PhD from this department. In there are so many universities, they are engaged in so many universities. Our parent university is technical university, so among the other than technical university, maths university, Dr. CV Raman university, we are collaborator of Dr. CV Raman university, and all other Indian university we are engaged in the PhD pursuing program. The research actively faculties is the collaboration with international and national universities. The department is a recognized consultant of various mineral water bottling plants, various companies, cement and industries, and such as Nagar Nigam and so many SECL and so many reputed organizations. Our vision is aspire to become hub of the excellence in fundamental and applied research in teaching for benefit of all stakeholders. And our mission is to provide a vibrant atmosphere to undergraduate students to nurture the spirit of scientific inquiries, to prepare doctoral candidates to become independent and creative practitioners of chemistry, to motivate the faculty to develop knowledge and skill, to develop wide range of research representing the chemistry. So this is the laboratory area of applied chemistry lab and research lab. These are the big laboratory and some equipments are shown in this slide. Bomb calorimeter is there. We will display or demonstrate you this bomb calorimeter, redwood viscometer, Penetsky Martin apparatus. By this bomb calorimeter, you can check what is the calorific value of solid fuel, and by redwood viscometer, we can check what is the viscosity of any oil. And Penetsky Martin apparatus is a very important apparatus. By this Penetsky Martin apparatus, we can check what is the flash point and fire point of any oil. So in every engineering aspects, these instruments are very useful and fruitful for engineers to outcome so many things. Flame photometer is there in research laboratory. We can determine sodium, potassium in with this flame photometer. Spectrophotometer is there. You are also going with this spectrophotometer, and your experiment is there with spectrophotometer. In next slide I will explain you. Conductivity meter is there, pH meter is there, turbidity meter, BOD incubator, respirable dust sampler, stack monitoring kit, water testing kit, fluorimeter. Fluorimeter is for uranium measurement that will be provided by Department of Atomic Energy to by us.
and radio potentiometer is there, GPS organ is there. So many things. Atomic absorption spectrophotometer is there, testing kit, UV visible spectrophotometer is there. So we have well equipped research laboratory as well as first year lab. So you can visit our laboratory whenever you come by physical manner, or offline classes will be start. You can see all these things in near future. Objective of our department: to provide a vibrant atmosphere to undergraduate students to nurture the spirit of scientific inquiry, to prepare doctoral candidates to become independent and creative practitioners of chemistry, to motivate the faculty to develop skill and knowledge. They develop wide range of research representing interdisciplinary activity. So in our department, we are also collaborate with electrical and mechanical engineering department for PhD degree. In applied chemistry laboratory, some titrometric determination of iron, hardness, alkalinity, chloride, calcium, magnesium are performing. Bomb calorimeter, as I told you, that calorific value can be easily determined by bomb calorimeter. Redwood viscometer for determination of viscosity of oil. Penske-Martin apparatus, determination of fire point and flash point of oil samples can be easily determined. Analytical balance, there are so many good analytical balance are with us, so we can measure up to 0.001, means we have a least count of Denver analytical balance, that is 0.001, means 1 1 by 100 milligram. So this is our research laboratory. I also again I earlier explained you what is the things which is with our us with our research laboratory. So these are the research laboratory. We have cyanide electrode, fluoride electrode, and so many research equipments are there in chemistry lab. This is a view of your chemistry lab. You can 60% can easily accommodate in this lab. These are few instruments, that is your spectrophotometer and Geldal apparatus, and some colony counter is there. Lastly, why chemistry is there in BTech program? So there are five major units in chemistry. First unit is your fuel. Second unit is your water treatment. Third unit is corrosion. And fourth unit is spectroscopy. And fifth unit is your nanomaterials. So first question arises that why you study applied chemistry in engineering. So there is a triangle, engineering or industrial triangle. If you see industrial triangle in net, then you can see energy, water, and raw material. All the corners of triangle, if you draw a triangle, there is a energy. If in middle portion is industry, then and third three area of triangle is energy, water, and raw material. So this course is designed as per this industrial triangle. So energy is your fuel, water treatment is there, and corrosion is the problem solving thing for your industry, and raw material is your nano raw materials. Now this time, that time is not for simple, that is nano technology is there, nano raw materials are there, and spectroscopy is the key material for our industry to determine materials and all these things with your thing. So first I explain what is fuel. Fuel you study as an energy material. If anyone placed in any engineer, however it is CSE or IT, nothing is without fuel. So there is a chemical thing, that is fuel. Calorific value. Calorific value means what is the energy of fuel, initial energy of fuel. If you go with IT engineer or CSE engineer, you need power, you need energy. Without energy, nothing can be on. You know, in third world, only the thing that produce fuel, that is coal. Without coal, any fuel production is not possible in third world.
or in all over world, we will produce fuel with 70% with coal energy. And if you see Chhattisgarh, then we have four or five thermal power plant in Korba area. So fuel is the material. Here we are initially only with fuel. What is fuel? What is calorific value? What is carbonization? What is the apparatus? You see the apparatus in road, that what is the pollution, or what is pollution, carbon dioxide pollution. Here in our course, that is flue gas analyzer. So you are just a simple knowledge of fuel, then water treatment. Anything is not possible with water, human being or industry. So water treatment is here. So simple water treatment, zeolite process, lime soda process, and these things which are in municipal corporation or general process is there. Corrosion, battery is required, and battery means all the energy system or the maintenance system. And lastly, the spectroscopy, that is the Lambert-Beer's law, or spectroscopy means a system by which you can assume or determine any material in chemistry with a simple ppm label. Parts per million label means milligram per liter label. And nanoparticle is the particle thing, that is new arrival of whole world. What is nano thing? That is 10 to the power 10 nanometer, or you can see so many things are in nanotechnology. Nanotechnology is very essential to learn now this time in industry, as well as your engineering system, as well as your medical system. So our course is designed with the base of industry and industrial triangle, fuel, water, corrosion, spectroscopy, and nanomaterial. Lastly, experiments. So this chemistry is also having 8 to 10 experiments. Among these 13 experiments, we are performing only 8 to 10 experiments. So as per our departmental discussion, we have determined surface tension and viscosity, paper chromatography, determination of hardness, determination of chloride content in water sample, determination of determination chemical analysis of salt, and determination of calorific value by bomb calorimeter, flash point and fire point, and spectrophotometric determination. So we will perform 8 to 10 experiment. Actually, there is a course outcome. So all course have some outcome based course. So as per course outcome, among these 13 experiments, we will perform only 8 to 10 experiments in our 90 days curriculum of BTech first year. So I stop my lecture here. Thank you one and all. Thank you very much. Thank you very much, Sir. I'm sure the students have benefited and they are much more clear on their view of what is to be expecting in the first year of their BTech program. Physics is one of the most fundamental scientific discipline, and its main goal is to understand how the universe behaves. Physics generates fundamental knowledge needed for the future technological advances. The role of physics in engineering education is not a static one. It responds and evolves with momentous changes in both engineering and physics, which are occurring continually. Study of physics develop the ability of problem solving, logical thinking, and also the ability to think intellectually. Physical concepts such as classical mechanics, thermodynamics, electromagnetism, quantum mechanics, physics, nuclear physics, etc., play a vital role in the process of innovation, which is crucial in the development.
An engineer designs the product itself or just figure out a way to build it. But either way, the success is impossible without an understanding of the physics behind each of them. Now, let us have a brief understanding of what inroads the subject of applied physics provides into the understanding of engineering. I request Dr. Samit Tiwari sir to enlighten us. Dr. Tiwari sir has an experience of more than 22 years in the field of imparting knowledge of physical phenomena. Sir has been awarded PhD in the year 1998. He has to his credit the publication of 10 research papers in an international journal, of which 6 were published in SCI Index Journal of High Repute. Under his guidance, one scholar has been awarded PhD degree and one has completed his MPhil. Presently, Tiwari sir is the head of Department of Applied Physics as well as the nodal officer for the post-matric scholarship program for Chhattisgarh state government. I hand over the stage now to Dr. Samit Tiwari sir. Please sir. हाँ वो कर देंगे म्यूट भी नहीं सब कुछ सही है अभी डायरेक्ट प्रेजेंटेशन पे आएंगे आप अपना चेहरा वगैरह नहीं दिखाना चाहते हैं ठीक है ऐसे यार फुल मिनट हाँ हाँ वो कर देंगे वो कर देंगे फुल स्क्रीन है देखो फुल स्क्रीन में मैं आपको करके देता हूँ सर अभी कर देता हूँ होने जब आपको आएगा ना तो मैं भी करके देता हूँ Good morning, one and all. अभी हुआ नहीं सर चालू करा Good morning, one and all. Welcome, students. I would like to introduce the first department of applied physics. सुनाई दे रहा था मैडम बोल रही हूँ। इसको बड़ा करो। Good morning, one and all. Welcome, students. I would like to introduce first the Department of Applied Physics. Bhilai Institute of Technology, Durg, is the leading autonomous educational and research institute in the central India. Physics department has been recognized as the first research center by CSVT Bhilai. The department has well-equipped R&D labs with modern experimental and computational facilities. The faculty members have been recognized as a reviewer of many reputed international and national journals. Research projects in this department are supported by CCOS and UGC DAE Consortium for scientific research. Now, before starting our presentation, first I would like to discuss about the physics. What is physics? Actually, everyone is saying that physics is the mother of all the branches, but most of the students does not know about the physics. Physics is the branch of science which reveals the relation between matter and energy. Actually, matter is everywhere, energy is everywhere. Now, our body, our human body, combines the matter and energy. If we extract the energy from our body becomes dead. Now, I would like to share the syllabus of physics of BTech first year.
The first topic of the syllabus or first unit of the syllabus is wave optics. The contents are interference and diffraction. So you have studied in the previous classes the interference, which is when two waves superposes, then the resultant effect would be maximum and minimum. So what is this maximum and minimum? These are the conditions of interference. So in order to know the conditions of interference, one must know about the concept, phase, phase difference, and path difference. Now, in the continuation, this interference divides, classified as the interference by division of amplitude, interference by division of wavefront. We will study in the classroom, and in the interference by division of amplitude, we will study wedge-shaped film and Newton's rings. The principle of Newton's rings based on the wedge-shaped film. This Newton's rings theory can also be applied in the lab. We'll have a lab, we'll have lab video, we'll provide you the lab video also. Now, in the division of wavefront, we'll study the Fresnel biprism. Now, we'll see how biprism drives single source into two coherent sources. So, biprism is a device. These two prisms are connected base to base such that the obtuse angle will be of 179 degree and remaining angles of 30 minutes each. This is the biprism. So, two refracting surfaces of biprism drive single source into two coherent sources. So, coherency is must for interference pattern. The next part of this unit is diffraction. Diffraction is nothing but a bending of light around the edges of obstacle. But one thing must know about the diffraction. One is important condition of diffraction. In every case, the light diffract? No. In every case, light will not diffract. The condition is that wavelength of light should be of the order of the edge of the obstacle, then light bends, otherwise it will not bend. This condition is necessary for diffraction. Here, the diffraction is classified as Fresnel class and Fraunhofer class. Fresnel class is not in our syllabus. In the tree method, I'll be discussing Fraunhofer class at single slit, Fraunhofer diffraction at n slit is in the syllabus. Now, the only resolving power of plane transmission grating will be discussed in the classroom. Here, Fraunhofer class at n slit and resolving power of plane transmission grating will be in our lab. These two things we'll discuss in the lab also. So we can see the diffraction pattern, we can visualize the diffraction pattern in the lab. Now, application of interference. Testing of surface finish, thickness of thin film, anti-reflection coating, interferometer design, create holograms. In spectroscopy, it helps to measure accurate wavelength of light. X-ray diffractometer is used to identify the structure of crystalline material. Now come to the unit number 2, which is geometrical optics and acoustics of the building. In geometrical optics, we will study the cardinal points of coaxial system of lenses. Now, what are the coaxial system of lenses? Actually, the number of lenses in the common axis make the coaxial system of lenses. What are the cardinal points? Cardinal points are 6 in numbers: 2 principal points, 2 focal points, 2 nodal points. By knowing these cardinal points, we can find out the location of image and characteristics of image. Next, we'll discuss the focal length of combination of lenses. We'll find in the lab the focal length of combination of lenses also. Location of properties of cardinal points, Newton's formula, eyepiece. Here, eyepiece is a device which is the integral part of the optical instrument. Eyepiece is used to magnify the image, aberrated free image. So aberration is must. There are two types of aberration we have to remove: chromatic aberration and spherical aberration. Now we'll discuss two types of eyepiece: Huygens eyepiece and Ramsdorff eyepiece.
In the same unit, the next topic is acoustics of the building. Acoustics of the building is the branch of science which deals with the planning of building with a view to provide best audible sound to the listener. It means that it is related to the sound or sound insulation. Now, next we'll discuss about the basic requirement for an acoustically good hall. Sebine's formula for reverberation. So reverberation will be discussed in the detail in the classroom. Absorption coefficient, determination of absorption coefficient. There are two methods to determine the absorption coefficient. We'll discuss in the class. Factors affecting architectural acoustics and their remedies. Application of cardinal points. Cardinal points are used in processing of image. It helps in missile technology. Cardinal points in eyepiece is used to locate and characterize the image. Now come to the unit 3, dielectrics and electron ballistics. Dielectric materials is the material in which the electrical energy is stored in the electric field. Here we have two important properties of dielectric materials, dielectric constant and dielectric loss. Dielectric constant is used to increase the capacity of capacitor or storage capacity of capacitor. So it is very difficult to explain each and everything. So I am just reading right now. Dielectric polarization is the content, one of the contents of unit 3. Bound and free charges, relation and polarization, relation with polarization, Gauss's law in dielectrics, dielectric susceptibility, displacement vector D, E and P vectors, polar and non-polar dielectrics, different types of polarization, temperature and frequency dependent of total polarization will be discussed in the classroom. Now, the second topic of this unit is electron ballistics. You have studied in the previous classes that motion of charged particle in transverse uniform electric field and transverse uniform magnetic field. So we have seen the trajectory of the particles, the path of the particles in both the fields. Here we'll discuss the mass spectrograph. The basic principle behind the mass spectrograph is the transverse of motion of charged particle in transverse uniform electric field and transverse uniform magnetic field. Where mass spectrograph is a device by which one can find the mass of ions and one can separate out the isotopes. Here we will discuss two types of mass spectrograph, Bainbridge and Astron's mass spectrograph. Now, in the next, we'll discuss the GM counter for radiation detector as a radiation detector. Application of dielectrics. Charge storing capacity of capacitor is enhanced. The dielectric heating can be employed in cases where heating by other means is difficult or not possible. Cooking in microwave oven is one of the examples of dielectric heating. Actually, dielectric heating came from where? From the dielectric loss. Dielectric loss converts into the dielectric heating, which have many applications. Now, in the unit 4, we'll discuss solid state physics, in which we would see band theory in solids. In band theory in solids, we'll discuss the formation of energy band, concept of forbidden gap, classification of solids, and the solids are classified as metal, semiconductor, and insulator according to the energy band theory. So formation of energy band means the interatomic space in the solids is reduces, then the atomic orbital converts into the molecular orbital or two or more molecular orbitals. The combination of these molecular orbitals form energy bands, means combination of energy levels having slightly different energies form energy band. So there are two bands
which we are going to discuss in the conductivity, is seeing the conductivity, the valence band, conduction band. The conduction band, initially the conduction band is empty band and valence band is completely filled band. Now, in the next, we'll discuss the semiconductor you have studied in the previous classes. Semiconductor is classified as the intrinsic semiconductor and extrinsic semiconductor. But here, the semiconductor is different because we are studying the semiconductor with band theory. Now, the Fermi level in both the cases, intrinsic and extrinsic. Extrinsic means p and n type semiconductors. Fermi level, dependence of Fermi levels on impurity concentration and temperature, law of mass section, and charge neutrality condition will be discussed in the classroom. PN junction diode is one of the application of semiconductor in which we would study the drift and diffusion current. What is drift current? Under the application of electric field in the PN junction diode, carrier flows in a certain direction, means this due to this the current produces called the drift current, and under the absence of electric field the concentration gradient produces the current which is called diffusion current. Now next we'll discuss depletion region and potential barrier. Next, formation of PN junction, and at last we will discuss the energy band structure of PN junction diode in forward and reverse biasing. Here we have so many applications of semiconductors: amplifiers, comparators, EMI filters, clock generation, EEPROM memory, image sensors and processors, light and touch sensors, solar cell and photodiode. Solar cell and photodiodes will be discussed in the lab, in the physics lab. Now the last unit is unit 5, laser and optical fiber. What is laser? Laser light amplification by stimulated emission of radiation. So here stimulated emission plays an important role to amplify the light. So in order to understand the stimulated emission, one must know about the interaction of radiation with matter, absorption, spontaneous emission, then come to the stimulated emission. In the next, we'll discuss the relation between Einstein coefficient A and B, condition for light amplification, population inversion, metastable state, component of laser, pumping. Principal pumping scheme, 3-level and 4-level pumping scheme. In this, we'll see how 3-level pumping scheme is inferior than the 4-level pumping scheme. Optical resonator is nothing but a cavity from where the laser beam produced and comes out from the point. Now, next and last, we'll discuss the types of laser, in which we will study the solid state laser, that is ruby laser, gas laser, that is helium neon laser, and semiconductor laser in the classroom. The last topic of this unit is optical fiber. Actually, optical fiber is a small in size, as thin as human hair. So, optical fiber is made of plastic conduits or silica. Information carrying capacity of optical fiber is very large. Means you won't imagine that 10,000 telephone calls can handle simple copper cables. On the other hand, 50,000, 1 millimeter optical fiber can transmit 50,000 telephone calls. You won't imagine. Now in this, we will see how light propagated within the optical fiber. And the next topic is principle of propagation of light signal in the optical fiber, acceptance angle, cone, numerical aperture, modes of propagation, index profile, types of optical fiber, normalized frequency, and ultimately we will see the optical fiber losses, that is attenuation and dispersion of the signal. The application of laser, it is used in the microwave communication, microsurgery, military purposes. They can serve as war weapons. They can be used to investigate the structure of molecules. Now, this is the application of optical fiber. Medical application,
Optical fiber is used in the medical application, endoscopy, ophthalmology, cardiology, used in the medical military applications such as fiber guided missiles are pressed into the service. Entertainment applications, a coherent optical fiber bundle is used to enlarge the image displayed on the TV screen, used as a pressure sensor, pollution detector, and used as a communication application, LAN, local area network. Now, at last, I would like to share one analogy with you. I know you all are discarded this analogy, but I must tell you. Here, see the diagram on the screen in which two parallel plates are there. This is nothing but motion of charge particle in transverse electric field. See, the two plates are there, two horizontal parallel plates are there. One plate is positively charged and lower plate is negatively charged. It means that the electric field is directed from positive to negative. Now, if the electron enters into this field perpendicular to the field, perpendicular to this field means direction of electron is perpendicular to this field, what will happen? The electron experiences a force due to which electron deviates from their path. After emerging out the field, it will continue to travel at a straight line and reaches to the speed. Now, one thing I want to show you here, if the velocity of electron is large enough, then electron spent less time in the field. So electron is less influenced by the field. So electron deviation will be less. Now, if the velocity of electron is small, then electron spent more time in the electric field. So it is spent, it influenced by the field more and it will deviate more. And in the absence of field, obviously electron will reach to their target. Now, the analogy is this. Electron is considered as a student, engineering student, and electric field is considered as the social media. If the student spent more in the social media, it will deviate more, he will deviate more. If the student spent less in the social media, it will deviate less. And if the student not using the social media, it will achieve, definitely he will achieve their target. Okay, thank you. Thank you, Samit Tiwari, sir. Diodes, semiconductor, optical fibers are all terms which an engineer must be most familiar with. Next, we have the mathematics. Mathematics is the language of physical science and engineering. The laws of nature, be Maxwell's equation for electromagnetics, Kirchhoff's law for circuit analysis, are nothing but mathematical expressions. Mathematics not only provide the medium for expression but also develop intellectual maturity. Maths is very important subject in engineering since one concept or another is required in all fields of engineering, which would help us in understanding how those concepts work when actually we read it. Integration, differentiation are required in electrical and electronics engineering, especially in signals, waveforms, etc. While Laplace differentiation integration plays an important role in solving equations in computers, which are used to find time complexity of a program.
Without a bit of knowledge of maths, particularly these concepts, one would have a difficult time in understanding what is actually taught in some of the core subjects, irrespective of which branch he is doing his engineering in. So I welcome Dr. Sanjay Sharma sir to this platform to guide the students through the part applied mathematics is going to play in the foundation courses of BTech program. Dr. Sharma sir was awarded PhD in the year 2002. He has an teaching experience of more than 23 years, both in undergraduate and postgraduate level. He has actively participated in the research work and has to his credit more than 90 papers in international and 13 papers in national journals of good repute. Under his guidance, 7 scholars have been awarded their doctoral degree, while student have completed the degree of MPhil. He has he is a member of the editorial board of many national and international journals. He has also published a book. He is presently gracing the portfolio of professor in charge of cultural activity as well as the professor and head of applied mathematics department. I now hand over this platform to Dr. Sanjay Sharma sir to enlighten us with the concepts of mathematics in engineering. Please, sir. Okay. Good afternoon, all of you. Welcome to BIT Durg. Now, about the department, for BTech first and second semester, a common syllabus has been implemented for all branches. The syllabus has been formed under the guidance of AICT modules, taking into account the various competitive exams and GATE as well, which the student will be facing in future. Highly qualified faculties are the strength of my department. Out of 10 faculty members, 7 are doctorate. The department has been recognized as a research center for carrying out PhD program in the mathematics. In last 5 years, 102 research papers published in the international journal. 4 of our faculty members are recognized as a research guide by CSC2 and other universities. Now, first scheme for BTech first semester, this is common to all branches. Now, 100 marks for theory paper, 20 marks, this is a class test mark, and teaching assessment, this is a 30 marks. So, total marks is 150. So, applied mathematics, total marks out of 150. Now, syllabus for BTech first semester, this is also common for all branches. Now, outline of the syllabus is Unit 1 is a matrices. Unit 2, this is a differential calculus. Unit 3, this is a partial differentiation. Unit 4, this is a integral calculus. Unit 5, this is a ordinary differential equation. This is the outline of the syllabus of the BTech first semester. This is a common for all branches. आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि सभी ब्रांचेस को अभी फर्स्ट सेमेस्टर में सेम सिलेबस पढ़ना है, देन सेकंड सेमेस्टर में सभी ब्रांचेस को सेम सिलेबस पढ़ना है. इसमें पार्ट बाय पार्ट पी एंड क्यू ग्रुप नहीं होता है. आपको याद रखना है मैथमेटिक्स 1 कॉमन फॉर ऑल ब्रांचेस, यानी सभी ब्रांचेस को यही पढ़ना है. So now unit 1 is a matrices, unit 2 is a differential calculus, unit 3 is a partial differentiation, unit 4 this is a integral calculus, unit 5 this is a ordinary differential equation. Now this is a complete content of the syllabus for unit 1 to unit 5, but I will discuss the one by one unit wise. Unit 1 is a matrix, Unit 2 is a differential calculus, Unit 3 is a partial differentiation, Unit 4 is integral calculus, Unit 5 is a ordinary differential equation. Now, first, this is a unit number 1. Unit number 1 is a matrices. अब देखिए, unit number 1 matrices. In class 11 and 12, आपने ये पढ़ा होगा types of a matrix, matrix operations, determinants, find,
फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इसका मीनिंग है आपने 11 12 में टाइप ऑफ ए मैट्रिक्स, इट मींस स्क्वायर मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, ये टाइप्स ऑफ ए मैट्रिक्स आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट मैट्रिक्स ऑपरेशन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये ऑलरेडी आपने कर लिया है। नाउ नेक्स्ट पोर्शन इज डिटरमिनेंट्स आपने फाइंड आउट किए हुए हैं। नेक्स्ट फाइंडिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, आपने जो इनवर्स फाइंड आउट किया था, दिस इज एडजॉइंट ए अपॉन मॉडुलस ऑफ ए, आपने मेथड जो इनवर्स के लिए यूज किया था, नाउ ए इनवर्स बाय एडजॉइंट ए अपॉन मॉडुलस ऑफ ए, यहाँ तक आपने 11 12 क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ लिया है मैट्रिक्स। बट अब इसके आगे आपको जो करना है, फर्स्ट नाउ रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स by different form, next inverse of the matrix by Gauss-Jordan method, consistency of linear system of equations, Cayley-Hamilton theorem, reduction of a matrix to diagonal form। तो आपको यहाँ जो मैट्रिक्स का पोर्शन है वो आगे का करना है। फर्स्ट फॉर एग्जांपल रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, रैंक इट मींस दिस इज ए नॉन जीरो माइनर, so collect the non-zero minor by different method. First method is simple method, second method is called the elementary transformation method. तो आपको जो मैट्रिक्स का बेसिक नॉलेज है उससे अब आगे बढ़ना है। आपको फर्स्ट कलेक्ट द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, नेक्स्ट आपको इनवर्स फाइंड आउट करना है। इनवर्स आपको फाइंड आउट करना है, जैसे आपने फर्स्ट एडजॉइंट है अपॉन मॉडुलस ऑफ ए से ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है, उसका बिल्कुल यूज यहाँ नहीं करेंगे। यहाँ जो इनवर्स फाइंड आउट करना है बाय गॉस जॉर्डन मेथड, it means now collect the inverse of the square matrix by elementary transformation method. Now elementary transformation method, this is called the Gauss-Jordan method. Same now solution of system of linear equation, ये आपने किया होगा, but now in BTech first semester now consistency of linear system of equations, यानी आपको linear equations के solution find out करने हैं through rank। आपने जो फर्स्ट टॉपिक किया है रैंक का यूज करते हुए नाउ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ये फाइंड आउट करने हैं इनके सॉल्यूशन, तो आपको यूज करना होगा कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट कैले-हैमिल्टन थ्योरम, दिस इज ए मेन पार्ट ऑफ द मैट्रिक्स, ये एप्लीकेशन में बहुत जरूरत पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, आप ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए फोर, ए फाइव तक सिंपल वे में फाइंड आउट कर लेंगे। बट मैं अगर बोलूं ए रेज टू पावर 625 फाइंड आउट करिए, तो ये आपको डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है, तो आपको यहाँ यूज करना होगा बाय कैले-हैमिल्टन थ्योरम। कैले-हैमिल्टन थ्योरम से मैट्रिक्स का पावर आप जितना भी ज्यादा आप फाइंड आउट कर सकते हैं, सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं बाय कैले-हैमिल्टन थ्योरम। एंड नेक्स्ट इज ए रिडक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स टू डायगोनल फॉर्म। डायगोनल फॉर्म आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, उसी फॉर्म में आपको यूज करना है। अब देखिए नाउ रिक्वायरमेंट फॉर दिस यूनिट, नाउ बेसिक नॉलेज ऑफ द मैट्रिक्स डिटरमिनेंट एंड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मीनिंग है अगर आपको इस यूनिट को पढ़ना है तो बेसिक नॉलेज ऑफ द मैट्रिक्स होना चाहिए, डिटरमिनेंट्स आपको मालूम होना चाहिए, एंड नेक्स्ट इज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ सम एप्लीकेशंस फॉर इंजीनियरिंग फील्ड, आप मैट्रिक्स का कहाँ देखेंगे? फर्स्ट इज नंबर वन इज डिजाइनिंग द ब्रिजेस, डिजाइनिंग कार स्टूडियो सिस्टम, एंड मेनी एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। आप ये मैट्रिक्स का एप्लीकेशन यहाँ भी यूज करें। नाउ नेक्स्ट यूनिट टू, यूनिट टू इज ए डिफरेंशियल कैलकुलस। इसे डिफरेंशियल कैलकुलस तो सभी ने पढ़ा हुआ है, और आपने जो पढ़ा हुआ है फर्स्ट इन क्लास 11 एंड 12, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, नेक्स्ट डिफरेंशियबिलिटी, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, फाइंडिंग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ एन, ये ऑलरेडी आपने सबने टच किया हुआ है क्लास 11 एंड 12 में। फॉर एग्जाम्पल फाइंडिंग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ एन, आप देखिए इफ y इज ए फंक्शन ऑफ x, अगर मैं बोलूं d रेज टू पावर 4 y अपॉन dx रेज टू पावर 4, तो आप बिल्कुल फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि 4 टाइम डिफरेंशिएट करना है और कलेक्ट द डेरिवेटिव। पर मैं बोलूं कि d रेज टू पावर 100 y अपॉन dx रेज टू पावर 100, ये फाइंड आउट करिए, तो आपको इसके लिए हेल्प की जरूरत पड़ेगी बाय सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो जो आपने वहां तक पढ़ा था, अब उसके आगे नेक्स्ट पार्ट है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट है फंडामेंटल थ्योरम, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट इज एक्सपांशन ऑफ फंक्शन। एक्सपांशन ऑफ फंक्शन, एक्सपांशन ऑफ फंक्शंस में इसका मीनिंग है नाउ एक्सटेंड द फंक्शन इन टर्म्स ऑफ सीरीज, किसी भी फंक्शन को सीरीज के टर्म्स में कैलकुलेट करना, नाउ यूजिंग द एक्सपांशन ऑफ फंक्शन एंड ट्रेसिंग ऑफ कर्व। तो दिस इज द मेन टॉपिक ऑफ दिस यूनिट।
फर्स्ट टॉपिक है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, फंडामेंटल थ्योरम, एक्सपांशन ऑफ फंक्शन, ट्रेसिंग ऑफ कर्व। ये आपको मेन टॉपिक आपको लिखना है। नाउ रिक्वायरमेंट ऑफ दिस यूनिट है बेसिक नॉलेज ऑफ द डिफरेंशिएशन, ए थॉरो रिवीजन फॉर ऑल डिफरेंशिएशन फॉर्मूले। इसका मीनिंग अगर आपको इस यूनिट को पढ़ना है तो पहले आपको डिफरेंशिएशन का नॉलेज होना चाहिए एंड नेक्स्ट जितने भी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं उन सभी को आप रिवाइज करें। नाउ एप्लीकेशन फॉर टेलर एंड मैक्लॉरिन सीरीज, आपका इसमें एक टॉपिक है मैक्लॉरिन एंड टेलर सीरीज, उसके एप्लीकेशन यहाँ यूज करने हैं आपको फॉर इलेक्ट्रिक डायपोल, रिडक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग हाईवे एक्सेट्रा एंड पावर फ्लो एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम। ये सब में आपको टेलर एंड मैक्लॉरिन सीरीज का एप्लीकेशन दिखना है। नेक्स्ट यूनिट 3, दिस इज ए पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन में आपने जो किया हुआ है, नाउ फर्स्ट इज ए डिफरेंशिएशन एंड मल्टी वेरिएबल फंक्शंस। ये जो आपने फाइंड आउट किया हुआ है ऑलरेडी क्लास 11 पर। अब आपको करना है पार्शियल डेरिवेटिव, यूलर्स थ्योरम, जैकोबियन, मैक्सिमा एंड मिनिमा, मेथड ऑफ लैग्रेंज अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर। फॉर एग्जांपल आपने क्लास 11 ट्वेल्थ में मैक्सिमा एंड मिनिमा वन वेरिएबल का किया था, अभी आपको मैक्सिमा एंड मिनिमा टू वेरिएबल्स के लिए फाइंड आउट करना है। तो ये सारे चेंजेस हैं जो भी आपने पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड आउट किए थे उन सबकी एप्लीकेशंस हैं यूलर्स फॉर्मूला, यूलर्स थ्योरम, जैकोबियन, मैक्सिमा एंड मिनिमा एंड लैग्रेंज मेथड। एंड सेम रिक्वायरमेंट सेम है, आपको डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले मालूम होने चाहिए एंड एप्लीकेशन ऑफ दिस यूनिट prevention of a orientation near point P and expand of volume near a point P। ये एप्लीकेशन हैं आपके पास पार्शियल डिफरेंशिएशन के। नाउ यूनिट नंबर 4 इज ए इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस में आपने डेफिनेट इंटीग्रल एंड इनडेफिनेट इंटीग्रल ये दोनों फाइंड आउट पहले ऑलरेडी कर चुका है। अब आपको जो करना है जैसे रिडक्शन फॉर्मूला, एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन, एप्लीकेशन इन क्वाड्रेचर, एप्लीकेशन फाइंडिंग द वॉल्यूम एंड डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल। आपको इस यूनिट में सारे डिफरेंशिएशन के सॉरी इंटीग्रेशन के सारे एप्लीकेशन यहाँ फाइंड आउट करने हैं। Same requirement for this unit is a basic knowledge of the integration, a thorough revision for all integration formulae। आपको दोनों तरह के जितने भी इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं वो आपको यहाँ पे याद रखना होगा। नेक्स्ट एप्लीकेशन फॉर इंटीग्रल कैलकुलस, फाइंडिंग द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ पावर केबल नीडेड टू कनेक्ट टू सबस्टेशन एंड प्लानिंग फॉर लॉन्ग मिशन स्पेस फ्लाइट। आपको ये एप्लीकेशन इसमें यूज कर सकते हैं। नाउ यूनिट नंबर 5 इज ए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने पढ़ा हुआ है नाउ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आप जो करेंगे नेक्स्ट इज ए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट क्वेश्चन, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर एंड कॉची एंड लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपने जितना भी डिफरेंशियल क्वेश्चंस किया हुआ है उसका नेक्स्ट पार्ट अब आपको बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में करना है। Same. Now, requirement for this unit is a different method learned for solving the linear differential equation. And some example of application are design of containers and funnels, design of heat spread in microelectronics, design for heating and cooling chambers, rigid body dynamic analysis. Now, mathematics is essential for engineers. As a famous phrase goes, scientists think a scientists think of brilliant things, and engineer makes it reality. For converting the dreams to reality, the pathway an engineer takes in mathematics. Mathematics is the foundation on which thoughts can be logically expressed so that it can be formulated to achieve the solution to any real world problem. Mathematics helps engineers achieve pure precision when building or adjusting something. Thank you.
Thank you, sir, for the knowledge you have imparted about the first course of mathematics the students will undertake in BTech. One of the most important aspects of engineering is effective communication, both verbal and written. Emphasis on humanities can prepare engineers to fulfill their cultural and civic responsibilities. Humanities courses emphasize on social skill and rigorous in written and oral communication. These courses prepare students to become better scientists and engineers. They prepare students to fulfill their civic and cultural responsibilities. Studying the humanities allow the students to become familiar with and use the creative ideas from great minds outside their field of study, which can help them generate new ideas and broaden their horizon. Even the state of the art scientific knowledge and the techniques the students learn in college can sometimes have a limited shelf life. For example, in the evolving discipline of computer sciences, medical engineering, etc. Mastering the basic communication skill can provide tools for expanding the knowledge. Humanities study can strengthen a student's ability to communicate and work with others. The wall that exists among the disciplines have been lowered and the students can move across discipline more freely. So to enlighten us about the role of the humanities and in language is going to play in the course of BTech, I welcome Dr. Anjana Shekhar Madam to grace this platform with a few words of knowledge and inspiration to the students. Dr. Shekhar ma'am has completed a PhD in the year 2009. Her thesis was on the topic Use of Myths and Legends in the novel of R.K. Narayan. She has published 13 papers in national and international journals of high repute. She has an experience of 17 years as educationist and is presently the head of the Department of Humanities. I request Anjana ma'am to address the students. Please, ma'am. Thank you, Anandita ma'am. A great morning to one and all. Firstly, let me extend my heartiest welcome to the 31st batch of DIT Durg. I wish you all the very best for this new journey. I wish the next 4 years of your life to be at most vital and fruitful. As we progress ahead in our lives, as it happens in any game, the difficulty level and challenges also increase. So instead of looking for an easy life, let's gather up our strengths and prepare ourselves to face and counter all the challenges confidently. And that is what engineers are supposed to be. They are problem solvers, not only for themselves, but for the society as well. The Department of Humanities also aims to equip the students with essential soft skills and strategies to become constructive problem solvers. The Department of Humanities was incepted with an aim to orient students with relevance and importance of communication in academic and professional front. It intends to impart quality education to students, keeping in view their overall development, enabling them to face various competitions and challenges in all walks of their life to support individual, professional, and societal growth. There are three faculties in the department: Dr. Anjana Shekhar, Dr. Swanita Sharma, Mrs. Swapna Sarkar. The department is supported with full-fledged language labs and departmental library for its optimal functioning. Now that you have chosen a professional course, professionalism is something that you have to practice from now on. Communication skills is not only required to face interviews or to make mass communication. It is a need of the hour for any professional setting. When we work in a team, we need to communicate regularly and fluently with each other for smooth functioning of the team. We need to listen to others to understand while being able to clearly and effectively communicate ourselves. The subject aims to enable students use communication strategies to meet workplace challenges and exchange information beneficially in various written and spoken contexts. It also aims to equip them to use language effectively to make clear, concise, and correct communication
to gain credibility and stability in business setting and apply the four skills of communication in ethical and legal forms of expression. The syllabus is crafted in a manner to systematically acquaint you to the four basic skills of communication that are listening, speaking, reading, and writing in professional setting. The syllabus is divided into these 5 units. The first unit gives an introduction to the basic concepts of communication process. The second unit, it enables students to infer and comprehend information from different sources and respond appropriately. The third unit provides fundamental skills and techniques in drafting effective business documents and research papers. The fourth unit enables students to plan and participate constructively and successfully in various formal oral communication situations. And the fifth unit gives an understanding about organizational communication and prepares students to select formats in making effective business communication. Now about the scheme of assessment, the end semester exam will be of 100 marks, internal test of 20 marks, and there will be teachers assessment of 30 marks based on assignments, attendance, and classroom participation. Now coming to the next part of the subject, that is the lab. Any skill can be improved and honed only by practice. This lab also aims to provide students a platform to practice and unleash themselves on what they have acquired theoretically. It grooms up their overall personality and prepares them to face confidently any formal and informal communication situation. The lab activities will be held through various lively exercises and through pertinent software. These are the list of activities that will be carried out in the lab. The scheme of assessment will be again external exam of 40 marks, which will be based on written test, paper presentation or group discussion, personal interview, and file work. Then internal assessment of 20 marks, which will be based on weekly performance, attendance, and discipline. With this, I wind up my words, once again wishing you all a very bright and successful future. Thank you. Thank you, ma'am. With your inspiring words, I'm sure the students are more enthusiastic to hone their skills of communication under your team's able guidance. With this, we come to the end of the second day of the induction program. I'm sure the future as students of our college were profited by all the knowledge and guidance provided by such experienced member of their respective faculty. It is to be it is so bewildering to view a valley from afar, but if we have a guiding hand and an enlightening tutor with us, the path becomes much more straightforward. But still, as Walt Whitman said, not I nor anyone else can travel that road for you. You must travel it by yourself. It is within reach. However, all the help that can be given will always be within your reach with such experienced and dedicated teachers as BIT has to offer you. At the end, I thank all the HODs for spending their valuable time with us. I also thank you all for your enthusiastic participation. With all the best wishes for your future endeavors, we end today's program. We shall meet again at the same time tomorrow and know more about the different engineering departments of our college. Good day to all of you.